Hello dear student, welcome to online classes. Myself Gajendra Singh Solanki from Shiv Jyoti Educational Group of Kota. Today we will be discuss about the chapter 4 of class 5th, fraction, addition and subtraction. Previously we discussed factors and multiples. Now in this chapter we are going to cover these topics: fractions, comparison of fraction, ordering of fraction, addition and subtraction of fractions, properties of addition and subtraction, simplification of fractions, word problems. Correct students? Now let me start to fraction. What is the fraction? A fraction is a part of a whole or a collection. So what is the fraction? A part of a whole. So like that, you know that very well, a cake is a whole part, correct? But if we divide into the 5 parts, so each part is 1 by 5. So this is the 1 by 5 is a fraction. Now let me discuss the another example. This is the watermelon. This is the whole part. If a watermelon is divided into two equal parts. So look at this. This is the 2 equal part. So each part is 1/2. So each part is 1/2. Okay. So this is the fraction. Now if a watermelon is divided into 4 equal parts, so each part is 1/4. So this is the 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 and 1 by 4. क्लियर स्टूडेंट? पक्का आपको पता लगा कि दैट मीन्स अगर हम वाटरमेलन के अगर हम क्या करें, 2 इक्वल पार्ट्स में अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? ईच पार्ट इज 1 and 1/2. So this is the 1/2. So each part is 1/2. So this is the watermelon and this is the fraction. Correct? 1/2 should be called fraction. Correct? Now how to write a fraction? So let me discuss the how to write. A fraction can be written using the 2 whole numbers and a line. Correct? Now move to the board. Student, let us take an example 3 and 7, the 2 whole numbers, and consider a line. Correct? And then written in the form of 3 by 7. So this is the fraction. Correct? Okay dear students. Now move to the board. Here look at this, 1 by 6. So 1 is number above the line is called the numerator and the 6 is the number below the line is called the denominator. Number below the line, this is the line and below the line, so number is 6. So number below the line is called the denominator. Now take the another example for explain for detailing in fraction. Move to the board. Now student, we consider a pizza. This is the a whole completely a pizza and cut into the parts 1, 2, 3, 4 and 5. Correct? So how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 pieces are the given. Correct? So each value of and each part of the fraction is 1 by 10, 1 by 10, 1 by 10, 1 by 10 and 1 by 10, 1/10 and 1 by 10, 1 by 10 and 1/10. Correct? So each part is 1 by 10. Now move to the board. Now what is the equivalent fraction? What is the equivalent fraction? A equivalent fraction have the same value or represent the same part of a whole, have the same value and the same part of the whole. So look at this. Correct? So these are the 2 parts. So each part is 1 by 2 and another is also 1 by 2. So these are the same value, correct, to the whole part. Now
look at this, these are the 4 brackets, 1 2 3 4. So completely the each part is 1 by 4, another is also 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4. So this is the equivalent fraction, the same value. So here the same values is 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 and 1 by 4. Another example is now 1 by 8, 1 by 8. Why are you take to 8 in the denominator part? Because it should be used to 8 blocks, 1 2 3 4 5 6 7 8, and so each value of each part is 1 upon 8, 1 upon 8, 1 upon 8, 1 upon 8, 1 upon 8 and 1 upon 8. So these are the equivalent fraction, correct? Now the next is like fraction. Okay dear student, what is the like fraction? Fraction that have the same denominator, looking this word, the denominator part. So the denominator part is this, correct? So they have the same denominator are the called like fraction, करेक्ट? इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जितने भी नंबर्स है जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, उनका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा. जैसे 1/2 लिखा है तो अनदर 3/2 होना चाहिए, 4/2 होना चाहिए, 5/2 होना चाहिए. दिस इज द सेम डिनोमिनेटर पार्ट्स लाइक दैट 2 2 2 2, करेक्ट? नाउ टेक द एग्जांपल्स. 9/3, this is the 9/3, this is the 4/3 and this is the 1/3. So all denominator parts are same, correct student? Now 3/8, 5/8, 7/8, 10/8, all denominator parts are same. So this is the like fraction. Now we will discuss about the unlike fraction. What is the unlike fraction? Fraction that have different denominator. Underline for this, different denominator. Different denominator का मतलब पहले वाले like fraction में हमने क्या देखा था कि जितने भी हमारे पास fractions नंबर थे उनके अंदर denominator सब में सेम था. 8 8 8, 4 4 4, 2 2 2. यहां हमारे पास क्या होंगे, जो डिनोमिनेटर फंक्शन होगा इस बार वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. लाइक दैट फॉर एग्जांपल 2/3, 4/6, 2/8. so these denominator part are different. so this is the unlike fraction, correct? so let me discuss the difference between the like fraction and unlike fraction. What is the like fraction? We already discussed about the denominators are the same. इसका मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, like fraction होंगे. टेक एन एग्जांपल 1/2, 3/2, 5/2. दिस इज द like fraction. Now unlike fraction, this is the denominator are different. इसका मतलब क्या होगा, 3/5, 4/6, 9/8. so this is the unlike fraction. so student clear? आपको पता लगा कि like fraction और unlike fraction में क्या difference है. done. now okay, look at here student, like fraction, clear? so look at this picture. These are the 4 blocks and the one block is the value is in a fraction part of 1/4. each part we already discussed in a definition. each part क्या होगा हमारा यहाँ पर 1/4 होगा, ठीक है? यहाँ पर कितना होगा, 2 पार्ट कंसीडर कर रहे हैं तो 2/4 एंड यहाँ पर अगर हम 3 पार्ट कंसीडर करते हैं तो 3/4. सो लाइक फ्रैक्शन इसका मतलब सेम द डिनोमिनेटर 4 4 4. क्लियर है? नाउ अब हम किसकी बात करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे. सो दिस इज द होल पार्ट, बट इफ वी कंसीडर इन द 2 पार्ट्स, अगर हमने यहाँ पर कितने पार्ट्स लिए हैं, 2 पार्ट्स कंसीडर करे हैं तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1/2. यहाँ पर अगर हमने 2 पार्ट्स कंसीडर करें बट यहाँ पर टोटल होल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी 2/3. और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल होल पार्ट्स कितने हैं 4, और अगर हमने 3 ब्लॉक्स अगर कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 3/4. तो आप लोग देख सकते हैं दिस इज द डिनोमिनेटर इज 2, नाउ 3 and 4. तो हियर द डिफरेंट डिनोमिनेटर, यहाँ के डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या होगा हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होगा. क्लियर? नाउ स्टूडेंट लुक एट द प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन? यहां पर हम बात करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, करेक्ट? फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर मतलब क्या होगा हमारा कि जो ऊपर वाली वैल्यूज थी हमारी, हमने लिखा था जैसे 7/8 लिखा, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमरेटर है और इज द लेस देन द डिनोमिनेटर, और जो बिलो द लाइन है वो क्या हमारा डिनोमिनेटर है.
तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन मतलब छोटा, किससे छोटा? द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। करेक्ट। तो आप लोग यहां देख सकते हैं, हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है और क्या है 2/5, तो हम 2 को क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर, और 5 को क्या कंसीडर करेंगे हम? डिनोमिनेटर। सो 2 इज लेस देन 5। ऑब्वियसली हमने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है यहां पर कि जो 2 है वो 5 से क्या है? छोटा है। अगर 2 5 से छोटा है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। करेक्ट। और अगर हम यहाँ 7/8 है तो 7 के किससे छोटा है? 8 से छोटा है, और 8 हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है। तो 7 इज लेस देन 8, सो दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। करेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम किसकी बात करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। क्लियर। और क्या होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज लेस देन द न्यूमरेटर। ओके, सो दिस इज द अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होगा? अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या होगा? जो हमारा डिनोमिनेटर पहले बड़ा था, लार्जर था, वो क्या होगा हमारा इस बार? छोटा होगा। किससे होगा? न्यूमरेटर से छोटा होगा। सो फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज लेस देन द न्यूमरेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Here the look at this example 3/2। अब 3 क्या है हमारा? न्यूमरेटर है, और 2 हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है। तो इस बार हमने क्या बोला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि डिनोमिनेटर इज द लेस देन, तो 2 हमारा क्या है? छोटा है। किससे छोटा है? 3 से। सो 3 इज द न्यूमरेटर एंड 2 इज द डिनोमिनेटर। ओके, तो इन दिस केस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट टू द प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। नाउ यूनिट फ्रैक्शन, you can look at this unit, this is the meaning of 1। ठीक है, तो फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 1, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी बेटा? 1 होगी। करेक्ट। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। सो फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। करेक्ट। नाउ लेट अस डिस्कस द एग्जांपल। फर्स्ट 1/5, तो दिस इज द न्यूमरेटर पार्ट एंड द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज 1। यहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। 1/3, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है? इसको भी हम क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर भी न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है? 1 है। करेक्ट। अनदर लुक एट दिस 1/7, 1/6 एंड 1/2, तो दीज ऑल आर द यूनिट फ्रैक्शन। करेक्ट। नाउ mixed fraction। okay, so what is the mixed fraction? Fraction made up of a whole and a proper fraction is called mixed fraction। अब आप लोग जानते हो मिक्स का मतलब क्या होगा? इसका मतलब कोई सेकंड वैल्यू तो होगी नहीं। इसका मतलब ये तो डेफिनेटली डन है कि किसी एक वैल्यू के साथ किसी दूसरी वैल्यू को क्या किया गया है? मिक्सअप किया गया है। करेक्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसकी डेफिनेशंस पे जाते हैं तो द फ्रैक्शन मेड अप ऑफ अ होल। मिक्स के फ्रैक्शन कैसा बनेगा? ऑफ अ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन याद है आप लोगों को? हमने क्या डिस्कस किया था? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? क्लियर। जिसके अंदर हमने क्या बोला था कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। किससे? न्यूमरेटर वाले पार्ट से। करेक्ट। सो लेट अस द एग्जांपल। होल, this is the 2 is the complete, this is not a fraction part, but 1/7 is a proper fraction। 1 is the numerator and 7 is the denominator। If we use completely 2 1/7, so it is called the mixed fraction। Correct student?